So a very good morning, students. Greetings of the day. Once again, I welcome you all for the online lecture series on the railways, airport and waterways. So today we'll talking about the airport configuration. This is actually the module 4 and this will be the lecture in which we'll be talking about the unit 4 of the module 4, right? So module 4 is actually about the airport engineering and this unit 4 is about the airport configuration. So the two parts which we'll be covering in the airport configuration actually consist of two elements, that is runway configuration and the taxiway configurations. Okay, so in the entire unit of the airport planning and design, this is the actually lecture 4 of airport planning and design related to the airport configuration, and we'll talking about the runway configurations and then about the taxiway configuration. Okay, I have told you the definition of the runway as well as the taxiway. Now we'll look towards its configuration. The first thing is that what are the factors affecting the runway orientation, and it is actually very important, my dear students. This is actually also asked as a 2 marks question, that enumerate or mention the factors affecting the runway orientation. So if we talk about the runway orientation and the factors which are affecting it, actually you can broadly classify it as wind. The first one is your wind, then your airspace availability, and then environmental factors, obstructions to navigation, air traffic control, visibility, wildlife hazards, terrain and the soil consideration. Okay, so these are the actual factors which are actually affecting the runway orientation. So the first one is your wind. Actually wind is very important. This actually decide how your run how the orientation will be uh, set as for the runway. Okay, दूसरी चीज है air space availability, how much space is available. The third one is the environmental factors. Okay, the fourth one is the obstructions to navigation, then air traffic control, visibility, wildlife hazards, and then the terrain and the soil consideration. Okay, so these are the actually the factors which are affecting the runway orientation. Okay, after that, uh, the runway configuration. So what is actually runway configuration? What are the points which have to be mentioned in the runway configuration? Actually many runway configuration are existing. Okay, the first thing, most of them are combination of the following basic configuration. अगर हम बात करें कि जितने भी अवेलेबल कॉन्फ़िगरेशन हैं, वो बेसिकली आपका या तो सिंगल रनवे है या तो आपका पैरेलल रनवे है। और पैरेलल रनवे में भी बेसिक सब क्लासिफिकेशन है कैसा, टू पैरेलल रनवेज विद स्टैगर्ड थ्रेशोल्ड, फोर पैरेलल रनवेज, देन सिंगल हो गया, पैरेलल हो गया, देन इज योर ओपन वी रनवेज एंड इंटरसेक्टिंग रनवेज। सो पर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें से सबसे पहला है आपका सिंगल रनवे, दूसरा है आपका पैरेलल रनवे। और पैरेलल रनवेज कितने टाइप के हो सकते हैं? टू पैरेलल रनवेज है, टू पैरेलल रनवेज विद द स्टैगर्ड थ्रेशोल्ड है, फोर पैरेलल रनवेज है, देन आपका है ओपन वी रनवेज, और नेक्स्ट लास्ट है आपका इंटरसेक्टिंग रनवेज, राइट? So ये है आपका different configuration which are actually available for the runway configuration. Okay, so the first thing was that what are the factors which are affecting the runway. So factors में अगर बात करें तो बहुत important था हमारा wind, air space की availability, environmental factors, then obstructions to navigation, air traffic control, visibility, wildlife hazards, terrain and the soil consideration. उसके बाद दूसरी चीज आती है रनवे कॉन्फ़िगरेशन में कि कितने कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है हमारे पास। तो सिंगल रनवे है, पैरेलल रनवेज है जिसमें आपका टू पैरेलल रनवेज है, टू पैरेलल रनवेज विद स्टैगर्ड थ्रेशोल्ड है, फोर पैरेलल रनवेज है, ओपन वी रनवेज है एंड इंटरसेक्टिंग रनवेज है। ठीक है, अगर पहला कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो ये है आपका दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी सिंगल रनवे, राइट? हियर यू कैन सी a single lane, that's why it is known as a single runway, which is used to take off the flight
राइट, फ्रॉम एयरपोर्ट एरिया, उसी को हम रनवे बोलते हैं, और ये है आपका सिंगल कॉन्फ़िगरेशन रनवे, राइट। उसके बाद आगे आते हैं parallel runway. Parallel runway, actually there are four types of parallel runway. Close parallels, matlab less than 2500 feet between the runways. Then intermediate parallel, I mean 2500 to 4300 feet between the runways. Then your is dual line runways, जिसमें 4300 feet or more between each pair. Then for parallel runway 4300 feet और ग्रेटर इन बिटवीन दी रनवेज। तो आपका पहला हुआ सिंगल रनवे। देन पैरेलल रनवे क्या है, उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, जो डिपेंड करता है उसके उन दोनों की बीच की डिस्टेंस। जैसे क्लोज पैरेलल का मतलब हुआ कि लेस देन 2500 फीट बिटवीन दी रनवेज, दोनों रनवे के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, लेस देन 2500 फीट। इंटरमीडिएट में 2500 टू 4300 चलेगा, राइट। उसके बाद डुअल लाइन में मोर देन 4300 फीट बिटवीन ईच पेयर, राइट। और एक होता है 4300 फीट और ग्रेटर इन बिटवीन दी रनवेज, राइट। सो दीज आर एक्चुअली दी फोर टाइप्स ऑफ दी पैरेलल रनवेज, राइट। देन आपका जो तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है वो है ओपन वी रनवेज। तो ओपन वी रनवेज क्या है, इसमें आपका जो है रनवे डाइवर्जिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। जो रनवेज होंगे दे विल बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस बट डोंट इंटरसेक्ट एंड फॉर्म एन ओपन वी शेप और ओपन वी रनवेज, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो आपका रनवेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज करता है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। डाइवर्ज जरूर करता है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करता है, और एक ओपन वी स्पेस जो है वो फॉर्म करता है उसका शेप, इसीलिए इसको कहते हैं ओपन वी रनवेज, ठीक है। अब पहली चीज है आपका ओपन वी विद डिपेंडेंट ऑपरेशंस अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन, और दूसरा है ओपन वी विद डिपेंडेंट ऑपरेशन टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन। तो दो चीजें हैं आपकी ओपन वी रनवे में, क्या है कि ये डाइवर्ज करता है डिफरेंट डायरेक्शंस में बट इंटरसेक्ट नहीं करता है, और एक ओपन वी शेप फॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं ओपन वी रनवे। तो ओपन वी विद डिपेंडेंट ऑपरेशन अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन, पहली चीज। और दूसरा है ओपन वी विद डिपेंडेंट ऑपरेशन टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन, मतलब एक आपका ऑपरेशन जो है वो इंटरसेक्शन से दूर होगा और दूसरा जो होगा वो टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली ओपन वी रनवेज। ओपन वी रनवे कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर हमें बात करनी है वो है इंटरसेक्टिंग रनवे। तो इंटरसेक्टिंग रनवे में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो दो रनवे है जो ओपन वी में डाइवर्ज जरूर कर रहा था लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इस केस में क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इट विल बी क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है। एंड इट इज क्लासिफाइड एज द इंटरसेक्टिंग रनवेज। यही है इंटरसेक्टिंग का मतलब, क्या हुआ, द नेम itself suggests that it will be intersecting at some point, ठीक है। and this type of the runway is used when there are relatively strong prevailing winds from more than one direction during the year, ठीक है। तो ये तब आपका ये रिकमेंड किया जाता है और वहां यूज किया जाता है जब आपका जो वहां की विंड की कंडीशन है वो क्या है कि वो स्ट्रांग है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी काफी है, मोर देन इन वन डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब आपका जो इंटरसेक्टिंग टू इंटरसेक्टिंग रनवेज एट नियर द थ्रेशोल्ड, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशंस। फिर है आपका टू इंटरसेक्टिंग रनवेज एट ईच वन मिड पॉइंट, और तीसरा है टू इंटरसेक्टिंग रनवेज एट फार थ्रेशोल्ड, आई मीन डायरेक्शन ऑफ द ऑपरेशंस। सो इंटरसेक्टिंग रनवे इज बेसिकली that the two or more runways will be crossing each other and they are classified as the intersecting runways, okay. And this type of the runway is used when there are relatively strong prevailing winds from more than one direction during the year. उसके बाद ये था आपका रनवे का कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो वी टॉक्ड अबाउट रनवे कॉन्फ़िगरेशन टिल नाउ। नाउ विल टॉकिंग अबाउट द टैक्सीवे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चार तरह के कॉन्फ़िगरेशन हमने रनवे के देख लिए, अब हम देखेंगे टैक्सीवे कॉन्फ़िगरेशन। तो studies based on the empirical result
so that the capacity of a taxiway system generally far exceed the capacities of the runway. पहली चीज तो ये है कि जब एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी कराया गया तो दो चीज पाई गई, क्या कि जो टैक्सी वे है और जो रनवे है, तो एक इंपेरिकल फॉर्मूला से ये रिजल्ट निकल के आया है कि जो आपका कैपेसिटी है एक टैक्सी वे क्या है, ये एक वो पाथ है जो कि आपके रनवे को बिल्डिंग से और अदर एरिया से कनेक्ट करता है। तो जो टैक्सी वे की कैपेसिटी है वो बेसिकली इंपेरिकल फॉर्मूलेस को यूज करके आपके रनवे से ज्यादा पाई गई है। तो स्टडीज बेस्ड ऑन द इंपेरिकल रिजल्ट शो दैट द कैपेसिटी ऑफ अ टैक्सीवे सिस्टम generally far exceed the capacities of the runway. The first thing, before starting the taxiway configuration, you all have to know one thing, that the capacity, okay, carrying capacity of a taxiway system is actually far greater than the capacity of the runways, right? उसके बाद taxiway configuration, तो ये तो हो गया इसकी इंपेरिकल स्टडी के हिसाब से। अब दूसरी चीज ये है कि द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट टू एंड फ्रॉम द रनवेज एंड द टर्मिनल कार्गो एंड पार्किंग एरियाज इज प्रोवाइडेड बाय अ सिस्टम ऑफ द टैक्सीवे। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका द मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट टू और फ्रॉम द रनवेज एंड द टर्मिनल कार्गो एंड पार्किंग एरिया इज प्रोवाइडेड बाय अ सिस्टम ऑफ द टैक्सीवे। दिस सिस्टम ऑफ द टैक्सीवे इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है, एंट्रेंस एंड एग्जिट टैक्सीवे, पैरेलल टैक्सीवे एंड बाईपास टैक्सीवे। क्या होता है कि आपके किसी भी मूवमेंट, एयरक्राफ्ट के मूवमेंट, रनवे और जो टर्मिनल आपका कार्गो होता है उसके बीच के जो डिस्टेंस, आई मीन उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसमें आपको डिफरेंट वे ऑफ द टैक्सीवे प्रोवाइड किया जाता है, एक सिस्टम ऑफ द टैक्सीवे प्रोवाइड किया जाता है। और वो सिस्टम ऑफ टैक्सीवे क्या इंक्लूड करता है, एंट्रेंस एंड एग्जिट टैक्सीवे, पैरेलल टैक्सीवे और बाईपास टैक्सीवे, राइट। तो ये तो हो गया इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं, पहली चीज है एग्जिट टैक्सीवेज। तो एग्जिट टैक्सीवेज क्या है, these are the taxiways provided at appropriate locations along the length of the runway so that the landing aircraft can maneuver out of the runway, minimizing their runway occupancy time। ठीक, तो पहली चीज ये है कि एग्जिट टैक्सीवेज क्या होता है, ये आपका कहां प्रोवाइडेड होता है। एक्चुअली इस तरह के टैक्सीवे जो है, these are provided at the appropriate locations along the length of the runway, right, so that the landing aircraft can maneuver out the runway, okay, minimizing their runway occupancy time। क्योंकि अगर आपका रनवे को मैन्यूवर कर लेगा तो जो रनवे की ऑक्यूपेंसी टाइम है वो क्या होगी, वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो एग्जिट टैक्सीवे में ये एप्रोप्रिएट लोकेशंस पे पहले तो प्रोवाइड किया जाता है, और इसका लेंथ ऐसा होता है कि आपकी जो लैंडिंग एयरक्राफ्ट है वो आपके इट कैन मैन्यूवर द लैंडिंग एयरक्राफ्ट सो दैट द रनवे कैन मिनिमाइज देयर रनवे ऑक्यूपेंसी टाइम, पहली चीज। उसके बाद है कितने तरह के होते हैं, ये होता है एक पहला राइट एंगल एग्जिट टैक्सीवे और दूसरा है हाई स्पीड एग्जिट टैक्सीवे। तो जब राइट एंगल एग्जिट टैक्सीवे की बात करेंगे तो दीज आर द एग्जिट टैक्सीवेज प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द रनवे। ठीक है, व्हेन द डिजाइन पीक आवर ट्रैफिक इज लेस देन 30 ऑपरेशंस, लैंडिंग ऑपरेशंस यहां मतलब लैंडिंग एंड टेक ऑफ, a properly located right angle exit taxiway will achieve an efficient flow of the traffic। So what is right angle exit taxiway? These are actually the exit taxiway placed at right angle to the runway। ये taxiway आपके runway के right angle पे place किए जाते हैं। ठीक है, जब आपका when the design peak hour traffic is less than 30 operation, अगर आपका जो है डिजाइन पीक आवर जो है ट्रैफिक का वो 30 ऑपरेशन से कम है, आई मीन लैंडिंग और टेक ऑफ को इंक्लूड करते हुए, अ प्रॉपरली लोकेटेड राइट एंगल एग्जिट टैक्सीवे विल अचीव एन एफिशिएंट फ्लो ऑफ द ट्रैफिक। तो ये माना गया है कि जो राइट एंगल टैक्सीवे है, अगर आपका 30 ऑपरेशन से कम उस एरिया में अवेलेबिलिटी है राइट लैंडिंग और टेक ऑफ की, तो उस समय राइट एंगल जो है टैक्सीवे वो काफी ही अप्रोप्रिएट माना गया है। ठीक है, अब आते हैं high speed exit taxiway। These exit taxiways are placed at an acute angle to the runway, right,
and are designed to provide high exit turn-off speed. These high-speed exit taxiway, when properly designed in terms of their number, location, and exit speed, can enhance the capacity of the runway. So, for the high-speed exit taxiway, these taxiways are placed at the acute angle. वो आपका रनवे से कितने एंगल पे था? 90 डिग्री पे, राइट एंगल. अब ये कितना होता है? लेस देन 90 डिग्री, मतलब acute angle to the runway, and are designed to provide high exit turn off speed. uh, these high speed exit taxiway, when properly designed in terms of their number, location, and exit speed, can enhance the capacity of the runway. Okay. उसके बाद दिस इज योर टिपिकल राइट एंगल एग्जिट टैक्सीवे. इसमें आप देख सकते हो राइट एंगल एग्जिट टैक्सीवे में कि क्या हो रहा है कि टैक्सीवेज आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द रनवे. हियर यू कैन सी the exit taxiways are placed at right angle to the runway, and when the design peak hour traffic is less than 30 operation, that is landing and takeoff, a properly located angle exit taxiway will achieve an efficient flow of traffic. So this is actually the typical right angle exit taxiway pictorial representation. उसके बाद है ये आपका टिपिकल हाई स्पीड एग्जिट टैक्सीवे. ठीक है, ये है आपका टिपिकल हाई स्पीड एग्जिट टैक्सीवे. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टिपिकल राइट एंगल एग्जिट टैक्सीवे एंड द टिपिकल हाई स्पीड एग्जिट टैक्सीवे. उसके बाद एंट्रेंस एंड पैरेलल टैक्सीवे. सो अगर हम एंट्रेंस और पैरेलल टैक्सीवेज की बात करें, तो एंट्रेंस टैक्सीवे का मतलब यहां ये हुआ कि एंट्रेंस टैक्सीवे प्रोवाइड एक्सेस टू द टेक ऑफ एंड take off end of the runway from the departing aircraft, and it also serves as the final exit taxiway for landing aircraft on a bi-directional runway. It is normally in the form of an L taxiway intersection with a right angle connection to the runway. So entrance taxiway actually provide the access to the takeoff end. ठीक है, ये क्या करता है? जो टेक ऑफ एंड है रनवे का, उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है. तो एंट्रेंस टैक्सीवे प्रोवाइड एक्सेस टू दी takeoff end of the runway, for what purpose? For departing the aircraft, and it also serves as the final exit taxiway for landing aircraft. और landing aircraft के लिए ये final exit taxiway की तरह काम करता है on a bi-directional runway. ठीक है, it is normally in the form of L taxiway intersection with a right angle connection to the runway. Then what is parallel taxiway? The taxiway running parallel to the runway connecting all the exit and entrance taxiways is called your parallel taxiway. So parallel taxiway is actually running parallel to the runway connecting all the exit and entrance taxiway is called the parallel taxiway. ठीक है, so this was your entrance taxiway. Here you can see the entrance and the parallel taxiway. ठीक है, उसके बाद आपका है बाईपास टैक्सीवे. तो व्हाट इज अ बाईपास टैक्सीवे? बाईपास आप कह सकते हो कि ये एक अल्टरनेटिव है. ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव. हाउ? इन अल्टरनेटिव टू होल्डिंग बे बाय अ बाईपास. ओके, टैक्सीवे पैरेलल टू दी, wait a second. Okay, so you can say it is used as an alternative to the holding bay by a bypass taxiway parallel to the entrance taxiway leading to the runway and are generally provided, right? When a preceding aircraft is not ready for the takeoff and blocks the entrance taxiway, other aircraft in the queue can use the bypass taxiway. तो ये एक तरह से ये जो bypass taxiway है, ये alternative तरीका है. Bypass taxiway provide flexibility in the runway used by permitting the ground maneuvering of steady streams of departing airplane. So
A bypass taxiway is used as an alternative to holding bay by a bypass taxiway parallel to the entrance taxiway leading to the runway and are generally provided. Now, when a preceding aircraft is not ready for the takeoff and blocks the entrance taxiway, अगर वो entrance taxiway को block कर रहा है, then other aircraft in the queue can use the bypass taxiway, and bypass taxiway provide the flexibility in the runway used by permitting the ground maneuvering of steady streams of departing the airplane. So this is about your bypass taxiway. How a bypass taxiway looks like? This looks like this. So this is about the configuration part of the runways and the taxiway. पहली चीज तो आपको ये जानना जरूरी है कि रनवे क्या होता है. To accommodate as well as to take off and to land, we need an area, and that particular area is known as your this runway, right? So runway में basically क्या होता है कि उसका factors जो उस पे डिपेंड करते हैं, जिस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसका ओरिएंटेशन, वो है आपका विंड, एयर स्पेस availability, environmental factors, obstruction to navigation, air traffic control, visibility, wildlife hazards, terrain and soil consideration. Then आपका है runway configuration. तो इसमें आपका single runway available है, parallel runway available है, जिसमें आपका two parallel runway with a staggered threshold, 4 parallel runway, then is your open V runways, then is your intersecting runways, right? Here you can see your single runway, then we have the 4 parallel runway, जिसमें आपका close parallel है, less than 2500 feet between the runways, intermediate parallel runway 2500 to 4300 feet between the runways, then your dual line runway 4300 feet or more between the each pair, then is your for the parallel runway. तो आपका फिर था ओपन वी रनवे, जिसमें डाइवर्ज करता है डिफरेंट डायरेक्शन से, बट किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, और ओपन वी शेप आर ओपन वी रनवेज. ठीक है, इसको हम ओपन वी शेप या ओपन वी रनवेज भी बोलते हैं. ठीक है, ओपन वी विद डिपेंडेंट ऑपरेशन अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन एंड ओपन वी विद द डिपेंडेंट ऑपरेशन टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन. सो इंटरसेक्टिंग रनवेज, जहां पे आपके दो रनवे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग रनवे, राइट? दे आर एक्चुअली अवेलेबल फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस. Then is your taxiway configuration. As the study itself suggests that the capacity of the taxiway system generally far exceed the capacity of the runways. Then different types of the configuration are entrance and the exit taxiway, parallel taxiway and bypass taxiway. Then exit taxiway, we have right angle exit taxiway and the high speed exit taxiway, and we can find a difference between the right angle exit taxiway as well as the high speed exit taxiway using this diagram. Then is your typical high speed exit taxiway or entrance taxiway and the parallel taxiway. Entrance taxiway is actually L-shaped taxiway intersection with a right angle connection to the runway, and parallel taxiway is your actually connecting all the exit and entrance taxiway is called the parallel taxiway. So this is your the parallel entrance taxiway. Okay. Then the bypass is your an alternative holding bay, right? Whenever a preceding aircraft is not ready for the takeoff and blocks the entrance taxiway, other aircraft in the queue can use the bypass taxiway, and bypass taxiway provide flexibility in the runways used by permitting the ground maneuvering of steady streams of the departing airplanes. So this is all about the airport configuration. Now we have to talk about the different unit in the different lecture. So if you have any doubt related to this airport configuration, you can write it to me directly to ankur495@bit.ac.in. Thank you for listening it to patiently. We'll talk about more factors governing the taxiway, as well as the what are the analysis of the wind and site selection approach. So we'll talk about this thing in the different lecture. Till now, thank you so much, and thank you for listening to patiently. Have a nice day. Thank you guys.